We start with the grace name of Shri most gracious and merciful, whose bounties are unbounded, whose vengeance is everlasting, whose blessings are unboundable, whose being is eternal, whose mercy is unlimited, whose provisions are unending, and whose love is unlike, whose worship is our faith. Light is a symbol of brightness and prosperity, as sunlight expels the darkness of night. Similarly, blessings bring prosperity and happiness in our life. To make this morning a blessed one, we invoke Lord Ganesh by kindling the lamp of knowledge and wisdom. For seeking the choicest blessing, for the same, I humbly invite our admirable beings and other dignitaries to accompany our highly regarded guests to kindle the lamp. Sir, please. ओम चंद्रमा मनसो जातक चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोतान्त्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत इदगुं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्ताये आत्मसानि प्रजासानि पशुसानि लोकसन्न्यवयसानि अग्निः प्रजानां मे बहुधे अस्मात् सुधत्ता दीपो ज्योति परब्रह्मा दीपो ज्योति जनार्दना दीपो हत मे पापं पूजा दीपं नमोस्तुते शुभं करोतु कल्याणं आरोग्यं सुखसंपदां शत्रुबुद्धि विनाशाय पूजा दीपं नमस्तुते वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा विनायकं गुरुं भागं ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सरस्वती ब्रह्म्यादो सर्वकार्यार्थ सिद्धये हरे ओम मा सहस्रदीर्घा मुरुगा सहस्राक्षा सहस्रपादा सभूमिगुं सर्वतस्त्वा प्रतिष्ठदशाङ्गुलं मा ओम चंद्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायता श्रोतान्वायुष प्राणस्य मुख उतामृतवसे सानो जदन्ने नातिरोहते एतावानस्य महिमान् जायास्य भूरुगः पादो सविस्वा भूतानि द्रवस्यामृतं दिवे. Now, I humbly request you, sir, to offer flower garland on portrait of Sir M.B. Please give a huge round of applause, guys. Today we are all gathered here to celebrate our very own 54th Engineers Day in remembrance of Sir Mokshagundam Visvesvaraya, the most outstanding engineer of all times. The engineering fraternity of India celebrates Engineering Day every year on 15th of September. This great contributor of growth and engineering was born on 15th September 1861 and contributed himself towards society for 101 years. Now, we would like to kindly request our Pro-Chancellor Sir, Shri Harsh Gautam Sir, to honor our guest, Professor A.M. Rawani Sir, with bouquet. We humbly request our Vice Chancellor, Professor S.K. Singh Sir, to honor our guest, Shri Dinesh Agarwal Sir, with bouquet. Sir, please.
Thank you, sir. Now we humbly request our guests and dignitaries and all of you to stand at their position to honor our state song of Chhattisgarh. Thank you, sir. Moving forward, it's our humble request to Shri Gautam sir, a dynamic personality who is the Pro-Chancellor of Shri Rawatpura Sarkar University, to address the audience with his golden words on this cheerful occasion of Engineers Day. Sir, please give a huge round of applause, guys. आज के इंजीनियर्स डे के इस खुशनुमा माहौल में हमारे साथ आज अपने अनुभव को बांटेंगे और हमें दिशा देने के लिए आए हुए हैं प्रोफेसर एम रवानी जी, डायरेक्टर NIT रायपुर। कृपया सब लोग तालियों से स्वागत करें। साथ ही दिनेश अग्रवाल जी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर गोदावरी पावर एंड इस्पात लिमिटेड, ये उस ग्रुप को बिलोंग करते हैं जिसको हम लोग नॉर्मली हीरा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज कहते हैं, उसके डायरेक्टर हैं और इनका एक अपना ही एक जज्बा है काम करने का। अभी आप उनके मुंह से सुनेगा, मैं उनका भी स्वागत आप सबसे कहूंगा कि ताली बजाएं। हमारे कुलपति जी, रजिस्ट्रार जी एवं मेरे सभी साथियों, आज का दिन हम लोग विशेष तौर पर एक उल्लासमय माहौल में मनाते हैं। हमारे जो सबसे पहले सिविल इंजीनियर थे जिन्होंने विश्व में हमारे देश का नाम ऊंचा किया, उनके जन्मतिथि के रूप में, जिसके ज्यादा व्याख्या की आपको आवश्यकता नहीं, क्योंकि सब लोग हर साल मनाते हैं और हर साल इसको जानते हैं। लेकिन जो मूल तक मैं वहां तक पहुंचना चाहता हूँ वो ये कि इंजीनियरिंग करना हमारा एक ऐसा पैशन होना चाहिए कि हम केवल पढ़े नहीं और जो कुछ सब्जेक्ट्स हैं उसके आगे बढ़कर कुछ नया शोध करें, कुछ नया जोड़ें, कुछ ऐसा करें कि आपका नाम के साथ साथ हमारी संस्था का नाम भी ऊंचा हो। एक छोटी छोटी बातें मैं जल्दी जल्दी कहूंगा क्योंकि मैं एज ए फ्रंट बैट्समैन हमेशा रहता हूँ
और कोशिश करता हूँ कि मैं आने वालों की जगह पर बचाकर समय बचा के रखूँ। तो मैं कहना चाह रहा था कि आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हो, सिविल इंजीनियरिंग में हो, कंप्यूटर साइंस में हो या इंजीनियरिंग की किसी भी विधा में हो, हर टॉपिक अपने में बहुत महत्वपूर्ण है। ये टेक्नोलॉजी का जमाना है। इस जमाने में कोई भी चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती है। यदि हम बात करें मेडिकल प्रोफेशन की, तो बिना इंजीनियरिंग के मेडिकल प्रोफेशन भी अधूरा है। जितने इंस्ट्रूमेंट्स बनते हैं वो सब इंजीनियर्स के हाथों बनाए जाते हैं, इंजीनियर्स के द्वारा बनाए जाते हैं। तो आजकल कहा जाता है कि जब से कोविड आया है तो डॉक्टर्स डॉक्टर भी नहीं करते, फिजिकली चेक भी नहीं करते। प्योरली बेस्ड है उन चीजों के जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स कहलाते हैं, जिनको हमारे इंजीनियर्स लोग ही डेवलप करते हैं, उसकी डेटा के ऊपर से आजकल इलाज होता है। और एडवांस सर्जरी की बात मैं यहाँ नहीं करूँगा क्योंकि मेरे को उसमें बहुत दखल नहीं है अधिकृत रूप से उसको कहने में। पर आजकल अधिकृत रूप से बात करें तो पूरा का पूरा ऑपरेशन सर्जरी जो होती है वो पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी बेस्ड होती है। तो जब कुछ इतना भी बदल रहा है और इसमें आप जैसे इंजीनियर्स में से जो बच्चे अपनी प्रतिभाओं को निखारने की इच्छा रखते हैं वो बिल्कुल आगे आए। एक चीज और बताना चाहता हूँ कि इंजीनियरिंग पढ़ने के बाद या हमारे यूनिवर्सिटी का कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने के बाद आपका जो विकास होता है वो केवल बौद्धिक विकास होता है। आपको एक कॉन्फिडेंस आता है उस सब्जेक्ट में, आपको आपका विचार बढ़ता है, आपका ज्ञान बढ़ता है। इसके बाद हमारी आपके साथ जो पहला बॉन्डिंग होगी वो ये कि हम आपके व्यक्तित्व को बदलने की कोशिश करेंगे, आपकी पर्सनैलिटी में वो कॉन्फिडेंस लाने की कोशिश करेंगे कि जब आप यहाँ से निकलेंगे तो आपको ये महसूस होना चाहिए कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। कुछ भी मतलब कुछ भी। जो कुछ भी करने की बात होगी उस समय आपके पास कोई भी लिमिटेशन नहीं होगी कि मैं ये काम करूँ या वो काम करूँ। मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, काम कोई बुरा नहीं होता, काम कोई छोटा नहीं होता। जो व्यक्ति काम पकड़ता है उस व्यक्ति को के ऊपर जिम्मेदारी होती है कि उस कार्य को किस हद तक पहुंचा दे। आपको याद होगा शेषन जी के नाम से सब लोग जानते हैं। उसके पहले चुनाव आयोग के बारे में सब पता था कि इस टाइप से कोई व्यक्ति पैदा ही नहीं हुआ है तो उसकी ऊंचाइयों को उसको ले जाए। तो ऐसा ही हर कार्य करना है, हर काम में अपने आप को परफेक्ट बनाना है और उसको ऊंचाइयों पर ले जाना है। मैं बहुत छोटी छोटी उदाहरणों के साथ आपको बताना चाहूंगा, एक मेरे लाइफ के एक्सपीरियंस के साथ बताना चाहूंगा। जब मैं ज्वाइन किया था एज ए असिस्टेंट इंजीनियर तो बहुत अपने आप को ही समझ में आ रहा था कि मैं पढ़ के आया हूँ, इंजीनियरिंग पढ़ के आया हूँ। तो मैंने पहला काम किया कि मैं हेल्पर से सीखने की कोशिश करूंगा। तो मैं अपने आप को फील्ड में खड़ा करता था, वो काम करते थे, मैं ऑब्जर्व करता था। ये आपका पहला लर्निंग है। जो आप पढ़े हो उसको फिजिकली कैसे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, यदि आपने वो नहीं सीखा तो आप अफसर बने रह गए तो निश्चित रूप से कहीं कहीं छूट जाओगे। हमारे यहाँ कैडिस के भी तार होता है, बहुत हैवी होता है। उसको बदलने के लिए नॉर्मली 15 से 20 लोग लगते हैं। तो उसका डिस्ट्रीब्यूटर निकालते हैं, आपको फील्ड में हम सब ले जाएंगे। आपको जो नाम आप पढ़ेंगे हम आपको वादा करते हैं कि हम उन चीजों से आपको मेल कराएंगे और प्रैक्टिकली आपको दिखाएंगे। तो उसको बदलने के लिए 15 से 20 आदमी लगते थे। हमने कहा यार हमारे पास तो आदमी की संख्या कमी है, कुछ ऐसा करते हैं कि ये काम 3 आदमी कर लें। और आपको जान के बहुत खुशी होगी कि ऐसे साधन हमारे पास बहुत छोटी छोटी चीजों से हो जाता है। और डिस्ट्रीब्यूटर का लोड हमने एक कम अलार्म क्लैंप होता है उसमें ट्रांसफर लिया और उसमें ट्रांसफर लेने के बाद वो 3 आदमी उस डिस्ट्रीब्यूटर को रिप्लेस कर दिए। तो ऐसा ही आपके कामों में प्रतिध्वनित होना चाहिए, प्रतिबिंबित होना चाहिए कि आप अपने उन समस्याओं को मिनिमम मैन पावर और मिनिमम टाइम के अंदर यदि कंप्लीट करते हैं तो यू आर रियली इंजीनियर। तो ये एक छोटी सी बात थी। अभी मैं आईटी सेल का इंचार्ज बीच में गलती से हो गया कि मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, लेकिन मुझे आईटी की जिम्मेदारी दी गई। आईटी की जिम्मेदारी मिलने में ऐसा था कि किसी व्यक्ति को उस क्लास में बैठा दिया जिसका A to Z नहीं आता है। जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने उनको एक ही चीज कही, मुझे तो आईटी समझता नहीं लेकिन आपको मेरा फील्ड नहीं समझता है, तो लेट अस मेक द ब्रिज। मैं फील्ड आपको फील्ड के एंगल से आपको हेल्प करता हूँ, आप मेरे को आईटी के एंगल से हेल्प करो। आई विल मेक द सिस्टम ए यूनिक। और हम लोगों ने वो करके दिखाया। मोर बिजली ऐप जो आज बहुत ज्यादा लोकप्रिय है, जिसकी डाउनलोडिंग की संख्या किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के ऐप से कई गुना ज्यादा है, वो अबाउट 10 लाख हो चुका है। तो वो मोर बिजली ऐप केवल और केवल हमारे एम्प्लॉइज स्टूडेंट कहना चाहिए, बच्चे थे उससे जब पहुंचा था दे आर राम, तो उनके साथ मिलकर के हम लोगों ने उसको बनाया। और आपको जान के खुशी होगी कि एसएपी करके एक बहुत बड़ा वर्ल्ड वाइड सैप बोलते हैं, कोई एसएपी बोलता है, एक आईटी का बड़ा भारी इंफ्रा है, सारे प्लेटफॉर्म उसके
SAP के माध्यम से लॉन्च होते हैं, IT वाले अच्छे से जानते हैं। जब SAP में एक हमारी समस्या आई कि SAP को हमने कहा कि भाई ये हमारा जो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर है इसमें ये एडिटेबल मोड पे है, इसको आप नॉन एडिटेबल कर दो, इसको आप नॉन फंक्शनल कर दो। आपको जो रिप्लाई मेरे को उनके कंट्री हेड से आया था बहुत सिंपल 2 लाइन का था कि सर हमारा जो स्ट्रक्चर है हम उसको चेंज नहीं करेंगे, आप अपने एम्प्लॉइज के ऊपर कंट्रोल करिए कि वो उसको एडिट ना कर पाए। अब आप समझ लीजिए कि चाबी जो है ताला खुला हुआ है और आप कह रहे हैं कि साहब आप उस पर चौकीदार बिठा दो लेकिन वो एडिट नहीं होना चाहिए, हम नहीं कर सकते। मैंने उनके बात की, बहुत लोगों से बात की, उनके पूरे टीम लीडर कंट्री टीम लीडर को बुलाया, एवरीबॉडी सर ये नहीं हो सकता। देन आई डिसाइडेड कि मुझे करना चाहिए। मैंने अपने बच्चों को बुलाया, आप जैसी है रिसेंट पास आउट है वो लोग, मैंने उनसे पूछा कि तुम में से ऐसी कौन है जो IT के एजुकेशन के टाइम में डेवलपमेंट का इंटरेस्ट रखते हैं। तो 3 लोगों ने हाथ उठा के सर हमारा फील्ड डेवलपमेंट का है लेकिन हम लोग यहाँ पे हेल्थ सेक्टर पे हेल्प डेस्क पे काम कर रहे हैं। तो मैंने कहा तुम अगर चाहो तो मैं तुम्हें मौका दे सकता हूँ डेवलपमेंट टीम बनाने का। तो वो तो मतलब उनको लगता था कि तो हो नहीं सकता है, सरकारी डिपार्टमेंट में कौन बात करता है डेवलपमेंट की, कौन सोचता है इस बारे में। मैंने कहा अपन करते हैं और आपको जाके खुशी होगी कि जो SAP ने मना किया था वो 3 बच्चों ने उसको करके दिखा दिया, उसको नाम फंक्शनल कर दिया। मैंने SAP को लिखा कि आप वर्ल्ड वाइड बड़ा सा नाम हो लेकिन मेरे यहाँ के रायपुर के कॉलेज से निकले 500 बच्चे आपका काम करते हैं जिसको आपने मेरे को डॉक्यूमेंट्री डिनाई किया है। ये है आपको उस हद तक सोचना है लेकिन आपके जो ऊपर है उनको भी आपको मदद करनी पड़ेगी कि आपको उस लायक बनाए, उस लायक आपको पहुंचाए। आज बहुत बढ़िया दिन है, बहुत अच्छी बातें सुनने को मिलेंगी। रवानी साहब मेरे साथ कॉलेज में पढ़े हुए हैं, हम दोनों ने साथ ही एडहॉक लेक्चर ज्वाइन किया था GCT रायपुर में। सर आज NIT के डायरेक्टर हैं और मैं पत्नी गली से बाहर निकल के दिल्ली बोर्ड में आ गया था क्योंकि मुझे एजुकेशन में मुझे समझ में आ गया था जिंदगी भर पढ़ना पड़ेगा। मुझे ललक थी मैं एडमिन में कुछ काम करूं, कुछ नया करके दिखाऊं और मैं हम दोनों की विधाएं अलग हो सकती हैं लेकिन लक्ष्य एक था। इनका लक्ष्य था बच्चों को एक प्रॉपर इंजीनियरिंग सिखाना, मेरा लक्ष्य था जो इंजीनियर्स आए हैं उनको प्रॉपर रूप से एग्जीक्यूट कराना। तो ये एग्जीक्यूटिव और एजुकेशन दोनों का मोटो कॉमन है, दोनों ही डेवलपमेंट चाहते हैं, दोनों हिंदुस्तान का विकास चाहते हैं, दोनों बच्चों में वो चीज चाहते हैं जो हम सब बनना चाहते हैं। आपके अंदर वो चीज को देखना चाहते हैं। रह गई बात अग्रवाल जी की, दिनेश अग्रवाल जी की, ये अपने फील्ड के वो माहिर इंसान है, बहुत कम उम्र में ऐसे लोग होते हैं जो नई नई डेवलपमेंट करते हैं। आज मैंने उनसे बात की, उन्होंने अपने इंडस्ट्री का दरवाजा हमारे रावतपुर सरकार यूनिवर्सिटी के लिए ओपन कर दिया है कि आइए और वो कुछ देखिए जो उन्होंने वहाँ डेवलप किया है। वहाँ रोबोटिक है, वहाँ प्लाज्मा कटर है, वहाँ क्या नहीं है। उन्होंने कहा है बच्चे आएंगे लेकिन बच्चों को केवल आना नहीं है, सीख कर जाना है। तो बच्चों आपके लिए नई एंट्री आना इस्पात में दिनेश अग्रवाल जी लेके आए हैं, ज्यादा वही बताएंगे उन्होंने क्या क्या किया है। लेकिन एक चीज बता देता हूँ वो क्या नहीं करते हैं, वो सब कुछ बनाते हैं, लोहा छोड़ के एक अच्छा इंसान भी बनाते हैं। वो अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, उनके अंदर वो बीज है। यदि आप उनके वट वृक्ष के नीचे पहुंच जाओगे, उनके साथ ट्रेनिंग ले लोगे तो आप बहुत आगे बढ़ सकते हो। क्योंकि जो चीजें किताबों के हरफ से निकलो तो सब कुछ नया नया दिखेगा, किताबों के हरफ से निकलो सब कुछ नया नया दिखेगा। ये दुनिया ये सब कुछ अज्ञात से दिखेगा, लेकिन जब ऐसे लोग मिल जाते हैं तो सब कुछ बदल जाता है। ऐसा लगता है ये तो हमारा पढ़ा हुआ है, यही तो हम पढ़े थे, यही तो हम देखे थे, यही तो हम सीखे थे, आज हम साक्षात देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। खूब पढ़िए हमारी यूनिवर्सिटी का नाम निकालिए। थैंक यू। Thank you, sir. We are very happy to have you, sir. And your each and every words are much valuable for every single one of us. Now, it's my humble request to Dr. R.R.L. Birali, sir, who is the Dean Faculty of Engineering, to address the audience on this auspicious day of engineers. Sir, please. Thank you. With the divine blessings of Param Pujya Maharaj Shri Honorable Professor A.M. Rawani, Director, NIT Raipur, Shri Dinesh Agarwal, Executive Director,
Godavari Power and Ispat Limited, our beloved Pro-Chancellor Sir, respected Vice Chancellor Sir, Registrar Sir of the University, all the deans, principals, head of the departments, faculty, staff members, and my dear students. Happy Engineers Day to all of you. Every year, India celebrates National Engineers Day on September 15 to recognize and honor the achievements of the great engineer, Sir Mokshagundam Vishweswaraya. Not only in India, along with India, Vishweswaraya great works are also celebrated in Sri Lanka and Tanzania on September 15 as Engineers Day. Now I'll give you the brief introduction of Sir Mokshagundam Vishweswaraya to all of you and why we celebrate Engineers Day on September 15. Vishweswaraya is also known as Father of Indian Engineering because of its enormous contributions and innovations in the field of engineering and development of society. India has been celebrating Vishweswaraya's birth anniversary as Engineers Day since 1968. Born on September 15, 1861 in a small village called Mudenahalli in Karnataka state, Vishweswaraya completed his school education in his hometown and later he has completed Bachelor of Arts from University of Madras. Then he switched to different career path and pursued civil engineering at the College of Science in Pune. Popularly known as Sir MV, he undertook several complex projects and delivered remarkable infrastructural results during his engineering career. He patented and installed an irrigation system with water floodgates at the Kadakwasla Reservoir in Pune to raise the supply of water and storage to the highest levels known as block system in 1903. The irrigation system was later installed in Gwalior Tegra Dam and Mysore's Krishnaraja Sagara Dam, the latter of which created one of the largest reservoirs in Asia at that time. He was also the chief engineer of the flood protection system from Hyderabad, and also he was instrumental in developing a system to protect Visakhapatnam port from sea erosion in Andhra Pradesh state. Vishweswaraya revolutionized the irrigation system in India by implementing irrigation and drinking water systems all over the country. Apart from his contributions in the field of engineering, he was also called the pioneer of economic planning in India, according to the Institution of Engineers of India. He has written books Reconstructing India and Planned Economy of India were published in 1920 and 1934, respectively. In 1915, while serving as Diwan of Mysore, Vishweswaraya was knighted as a commander of the British Indian Empire by King George V. He received the highest honor, Bharat Ratna, in 1955, and he became a member of the London Institution of Civil Engineers before he was awarded a fellowship by the Indian Institute of Sciences, Bangalore. And finally, Mokshagundam Vishweswaraya passed away in 1962. Once again, I wish you all a happy Engineers Day, and I'll end my speech. And one of the greatest engineer and former president of our India, he said, teaching is a very noble profession that shapes the character, caliber, and future of an individual. If people remember me as a good teacher, that be the honor for me. This is said by Dr. APJ Abdul Kalam. Thank you, and all. Thank you, sir.
Now, we would like to invite on stage Professor S.K. Singh sir, who is none other than the Vice Chancellor of Shri Rawatpura Sarkar University, to galvanize all of us with his valuable words on this golden occasion of Engineers Day. Sir, please. Thank you. Let me begin with seeking the divine blessings of Param Pujya Maharaj Ji and paying my heartfelt tribute to Sir M. Visvesvaraya Ji, whose birthday we are celebrating as the Engineers Day. Present on this occasion, the very special guest, Professor A.M. Ramani, the Honorable Director of National Institute of Technology, Raipur, equally important and distinguished person, Sri Dinesh Agarwal Ji, the Executive Director, Godavari Power and Smart Limited, our own Pro-Chancellor, Sri Harsh Gautam Ji, the Dean Faculty of Engineering, Professor Viradi, the Registrar, M.K. Singh Ji, and sitting in front of me in the hall, my colleagues, teacher colleagues and the Dean's directors, dear students. First of all, let me convey my best wishes to each one of you sitting in this hall for the Engineers Day. And you know that it was told by Virali that the birthday of Sir M. Visvesvaraya is celebrated as the Engineers Day. He once said that the scientists dream to do great things, and the engineers do them. So, I have read once in a book that engineering is a professional art for applying the science to optimum conversion of resources for the benefit of the human mankind. This single sentence speaks a lot about the importance of engineers for their contribution to nation building and also uplifting and elevating the quality of human life. So we celebrate this Engineers Day just to thank the engineers for their contribution to the society and also applaud them for their dexterity and the integrity, etc. Engineers are sitting on the dais. They will interact with you, they will address you. One thing I would like to convey, that to me it appears that each branch of the engineering must evolve and must evolve continuously, keeping in view the requirement of the new emerging Industrial Revolution 4.0. Because if the branches are not evolving as per the requirement of Industrial Revolution 4.0, they will be left behind, and the students who will be coming out of the engineering institutes, perhaps they will not be finding themselves fit into the newer environment that is emerging. And remember that this new industrial revolution 4.2 requirements, they are dynamic in nature, not in static. They are changing and they will be changing per day at a very fast pace. So you will have to keep changing yourself in order to move in tandem with the changing requirement. Another thing to which appears, I was reading a book about the Society 5.0, which thinks of what is going to happen within the next 10 years. They are conceiving a society which will be human-centered and which will be trying to balance between the economic development with the resolution of the social problems. Because as a human being, we cannot compromise with the material growth, or you can say the economic development. And as you know that the economic development has given birth to many social evils. So with the economic development, what we will have to resolve the social problems also on the continuous basis. And that will be done with the help of a system that highly integrates the cyber space and the physical space.
So the kind of society which we perceive to be emerging in the next future, there will be a very close interface and interaction between the human being and the technology. But what we expect that the human being will always have an upper hand. So this is the day for each engineers or would-be engineers sitting over there to take a promise that they would make use of their intelligence and the knowledge for the benefit of the society. What I'm trying to convey is that they will have to think of the human face of the engineering, human face of the science. If this human face of the technology and science is ignored and it is not given emphasis upon, what will happen? The technological knowledge or the scientific knowledge, it will not do the good for the society, rather it will destroy the entire society. So what I am expecting from the engineering students, budding engineering students today, that they will have to come forward, they will have to take a oath that, look, their intelligence, their knowledge of technology, their knowledge of engineering, and their knowledge of science will be used only for the benefit of the society, country, and the group as a whole. It will not be misused. With these words, let me towards the end take this opportunity to extend a warm welcome to my guests sitting on the dais and also sitting off the dais on this occasion. And let me convey my good wishes to each one of you. Thank you. Thank you, sir. Your words motivates every single one of us. Moving further, we would like to introduce you the widely renowned, the erudite, the intellectual personality, the director of National Institute of Technology, Raipur, who has more than 29 years of teaching or research and administrative experience in Government College of Engineering or NIT, and has delivered keynote speeches in many countries like USA, Singapore, China, Mauritius, Hong Kong, and Thailand. He is the editor-in-chief of International Journal of Strategic Management and Business, and also of Journal of Information and Operation Management. He is conferred with Rashtriya Gaurav Award, also the recipient of Best Management Guest Award. He is none other than Professor A.M. Ravani, sir. We humbly request you, sir, to bless all of us with your cherished words, sir. Sir, please. Very good morning to all of you. Shri Rawatpura, Executive Director, Godavari Power and Ispat, Professor S.K. Singh, Vice Chancellor, Shri Harsh Gautam, Pro-Chancellor of the University, Arali ji, Dean Academic of this institute, faculty members of this institute, and students. Happy Engineers Day. Happy engineers to those who are engineers and those who are going to be the engineers. As is well said that we are celebrating Engineers Day every year on 15th of September because Sir Visvesvaraya has made a lot of contribution to the engineering and to the society. To remember those contributions and to follow his path, we are celebrating this Engineers Day every year. Very basic question comes in my mind. What is engineering and who is engineer? You will all surprise that it's a very simple question. But I tell you, it's not that simple. Engineering, as Professor Singh just now said, is the application of the science. That's okay. We engineers, what we do, whatever the developments are there, we apply. And the knowledge, that is the engineering. But who are the engineers? Engineer, one who has acquired B.Tech or BE degree, who has passed the qualification, is he an engineer?
Are we making best wishes for those engineers who are qualified only? I think no. When we say happy engineers, we are wishing those engineers who are basically utilizing their knowledge for the welfare of the society. Utilizing their knowledge in a proper way. If you see all around the world, the contribution of engineers is lot many. Whether it is communication, whether it is transportation, whether it is health sector, everywhere you see engineering applications are many. And definitely all this is done by my engineers only. But the other side of the coin is also there. If we talk about any technology, technology has a positive impact and negative impact as well. So we have to think that how best we can utilize the technology for the betterment of the society. Today, students want to pursue their engineering, maybe just to get respect in the society after getting degrees, having a good source of earning, that might be their motive. Yes, all these are necessary for the survival, for their bread and butter. Money is a must, no doubt about it. But basically, we should also think that the knowledge acquired during this engineering, how that is being utilized. How the engineers are utilizing that knowledge. Whether they are utilizing for the benefit of the society or that is merely learn something as not taking proper use of that. If I see in India, about 15 lakhs engineers are produced every year. When I say engineers are produced, means those who are having engineering degrees. And many engineering colleges are there, maybe in a thousands engineering colleges are there. So the question comes that on this Engineers Day, the engineers, would-be engineers and those engineers, those who are sitting there, their prime duty is to think for the betterment of the society. Then only they become eligible for the best wishes of the Engineers Day. And secondly, the engineering educational institutes, because this is an institute where we are imparting knowledge, engineering knowledge to the students. My institute is also the same. So, it's our duty as a teacher to impart the knowledge of engineering, that is okay, but also convey this message to our students. That this knowledge should be utilized for the betterment of the society. Knowledge should be for the welfare of the society. As I said that every technology has the other side. So they should use the technology for the benefit of the society. The engineers, outgoing engineers, should understand this concept properly. The job is not over here. Engineering job is not only for the betterment of the society, but we have to think a step ahead. Say we engineers are developing technology and we say that we are contributing, engineering is contributing a lot in the economy. A lot of industrialization is there. But the industrialization causes many side effects as well, like pollution, like the products produced which are there for the comfort of the society, for the comfort of the people. But it also has some negative effects. If I take an example of the single-use plastics. Single-use plastic, who has produced that? Basically, we engineers did that. And that is basically for the convenience of the society persons.
But now we understood that it has a lot of bad effects as well. So it is our duty now to limit its uses or to avoid its uses to the maximum extent possible. Not only we ourselves should avoid it, but it is our duty to train the society, to make the society aware about its harmful effects and tell them that how best they can be substituted with the other products. It is also the duty of the engineers to develop the substitute products so that these products can be omitted. So basically, educational institutes should train the students in that way so that they work for the benefit of the society. And the engineers at the educational institute should make aware the society about this, should make habit of the society that they should avoid using such kind of things which are harmful for the society in large. This is also our duty. So when we are discharging our duty, we are performing all these tasks, then only we are true engineers. And then only we are, in a real sense, following the path of service society. And in that sense only, we can wish each other Happy Engineers Day. So at the end, I wish you all the Happy Engineers Day with the hope that you would be the real engineers. Thank you. Wow, such a powerful word are sure to motivate every single one of us right down to our very core. Thank you, sir. Next, we have amongst us an extremely